हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है द अनमेकिंग ऑफ इंडिया एंड हाउ द ब्रिटिश impoverished द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। और हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये वीडियो जो है जी, ये बड़ी एक रिकमेंडेशन है इसके लिए, और बड़ी हाईली रेटेड ये हमारे पास इसकी रिकमेंडेशन आई थी। एक दोस्त ने बेंगलुरु से, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था हमारे लिए, सो हम ये देखने के लिए जा रहे हैं। जो टाइटल है वो अपने आप के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, और मतलब लिटरली समझ आ रही है कि हम क्या देखने वाले हैं इसके अंदर। लेकिन खैर, चलते हैं, देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया जा रहा है, और उसके बाद करते हैं गपशप। चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोनो 3, 2, 1 एंड चलिए जी। In the year 1700, India's share in the world's economy was an astounding 27%, more than all of Europe combined. 250 years later, India's share had dropped to less than 3%, and its people were left impoverished. What happened? Strap in, adventurers. We're about to dive into a dark and messy history. Welcome to 18th century India. In 1707 CE, the death of Mughal Emperor Aurangzeb sends the empire into a decades-long spiral. In his wake, an endless parade of weak princelings forced themselves upon the peacock throne. With the Mughal Empire teetering on the brink of collapse, regional powers jostle for supremacy. Land grabs and title claims, infighting and betrayal. India is vulnerable. The situation is so precarious that in 1739, Persian Emperor Nadir Shah invades North India and sacks Delhi. During this period of disorder, the British sensed opportunity. Leveraging their unique advantages as a foreign power, they bribed and blasted their way into a dominant position in the subcontinent. India was no stranger to dealing with foreign aggression, but the British were not like those who had come before. They were not like Nadir Shah, who looted and simply left. Nor were they like the Huns, who, while shedding Gupta blood, became Indian themselves. Yes, the British were different, for they saw India as an inexhaustible gold mine whose resources were to be forever extracted. By the time India won its independence in 1947, its native institutions had been demolished, its economy deindustrialized, its trade networks severed, and its people more deeply divided by caste and creed. In just 200 years of colonial rule, the India that once inspired the world was unmade. The halcyon days of India are over. She has been drained of all the wealth she once possessed, and her energies have been cramped by a sordid system of misrule. The deliberate bleeding of India by the British was so extreme that famed American scholar Will Durant referred to it as the greatest crime in all of history. So let's pull back the curtain and see what India was like before colonialism. In the 19th century, the American J.T. Sunderland wrote about the India that the British found when they arrived. India was a far greater industrial and manufacturing nation than any in Europe or Asia. Her textile goods were famous all over the civilized world. So was her exquisite jewelry and her precious stones. So was her pottery, her porcelains and ceramics. So were her fine works in metal, iron, steel, silver, and gold. She had great architecture, equal in beauty to any in the world. She had great merchants, businessmen, bankers, and financiers. She was not only a great shipbuilding nation, but had commerce and trade which extended to all civilized countries. That may seem like heavy-handed praise, but the record does show that pre-colonial India was a dominant manufacturing economy. Let's take a closer look at the textile, shipbuilding, and metalworking industries. India was a textile superpower for most of its long history. There were many textile centers in the subcontinent. Coastal Andhra was a block printing hub, for example, while Gujarat and Bengal were known for their high-end woven products. There was global demand for these items. In fact, India enjoyed a mind-blowing 25% share of the global textile trade by the mid-18th century. This thriving textile trade had knock-on effects for the entire economy. For example, the popularity of Indian textiles led to the creation of stable international distribution networks. By piggybacking on these networks, other Indian artisans could sell their goods worldwide at a reduced cost. As a result, many different industries flourished alongside the Indian textile industry. We know that international trade was conducted primarily along maritime routes, and so the Indian shipbuilding industry had developed into a behemoth too.
A significant number of Indian ports were engaged in the shipbuilding industry. Dhaka, Masalapatnam, Surat, Calicut, Quilon, and many, many others. Entire rural communities were involved in the production and processing of materials used to construct ships. Quality was paramount. Consider the Bengali merchant fleet in the early 17th century. The fleet consisted of nearly 5,000 ships, each capable of carrying up to 500 tons of goods. These ships were constructed in Bengali ports by native artisans who had the skills to craft elaborate wood, iron, and brass fittings. According to one British maritime observer, Indian vessels combine elegance and utility and are models of fine workmanship. Merchant contracts indicate that Bengali ships were much more durable than English ships. Bengali ships had an average lifespan exceeding 20 years, while English ships were not known to last more than 12. Quite a difference. India was a longtime pioneer in the global steel industry. As early as the 6th century CE, crucible-formed steel, which came to be known as Wootz or Damascus steel in the West, was being produced for export by Indian blacksmiths, particularly along the Malabar coast and in the Deccan. Arab and European officers regularly imported blades from India. While these blades were purchased as wartime implements, they were so robust and beautifully crafted that they also served as a mark of high status in times of peace. Though we've barely scratched the surface, it should already be clear that India was a manufacturing juggernaut, a thriving exporter of high-quality goods to markets throughout the world. How did the British manage to unmake all of that? The fundamental principle of the British has been to make the whole Indian nation subservient to the interests and benefits of themselves. And so, once the British took power, they changed the entire dynamic of the Indian economy to suit their own interests. The first step? Dismantling all native industry. To start, they established a legal monopoly over Indian textile goods and cut off the export market, which immediately disrupted long-standing trade links. Having now made themselves the exclusive buyers of Indian textiles, the British then changed the way that they paid for those goods. Instead of using foreign currency, they paid using the tax revenues extracted from India. The Indian economy stagnated and prices collapsed. Skilled artisans, who once fueled the vibrant Indian economic engine, were now significantly poorer and more restricted than ever before. And it didn't stop there. Soon enough, British manufacturers lobbied their government to completely eliminate the competition from the Indian textile industry. See, despite the restrictions imposed on Indian industry, British manufacturers were still finding it difficult to compete with Indian products. Company soldiers were sent to smash Indian looms. According to several different accounts, they even went around breaking the thumbs of weavers so that they could no longer ply their trade. But that's not all. To ensure that the Indian textile industry could not recover, adapt, or innovate itself back into relevancy, the British imposed an absurdly harsh 80% tariff. This had an immediate catch-22 trap effect. Exporting goods from India to the UK was now economically unviable. But remember, Indians were restricted from selling to anyone else. Similar restrictions were imposed on nearly every branch of manufacturing in India. India was reduced to being a mere exporter of raw materials, like cotton and metal ore, so that the British could sell finished products back to Indians at a premium. We conquered India as an outlet for the goods of Britain. I'm not such a hypocrite to say that we hold India for the Indians. The colonial deindustrialization process was so complete that by 1947, only 0.7% of India was employed in any form of manufacturing. But skilled workers had to go somewhere, do something. The British monopoly on industrial production drove Indian artisans, merchants, builders, and others into agriculture en masse. In the words of Dr. Charles Hall, India's population has been thrown back upon the soil because Britain's discriminating duties have ruined every branch of native manufacture. Rural wages cratered to historical lows, and in fact, the land itself could not sustain the influx of newly disenfranchised workers. Poor seasonal harvests and droughts gave way to catastrophic famines and mass poverty. With most Indians now converted into peasant cultivators, the British sought to exploit them further. They began to tax cultivators as the primary revenue source for the administration. Taxes were extreme, pegged at 50 to 80% of gross income and calculated before the harvest. The result? Indian cultivators often owed more in taxes than they earned as income. The British knew how harsh this really was. They openly conceded that they were imposing the highest tax rates in the world, and that taxes were more than 3 times higher than they had ever been under Indian rulers. To add insult to injury, the British even bragged about it in Parliament. The Indians have been taxed to the utmost limit. Every province has been made a field for higher exaction,
and it has always been our boast how greatly we have raised the revenue above that which the native rulers were able to extort. Colonial taxes were so burdensome that 2/3 of the population in directly ruled British areas fled to the hinterlands, where native Indian lords could at least minimally protect them from financial depredation. The millions who stayed behind could hardly afford to pay taxes, and the situation was worsened by the fact that the British did not negotiate tax payments. Horrors were perpetrated under the guise of sinless mathematical neutrality. Tax defaulters were confined in cages and exposed to the burning sun. Fathers sold their children to meet the rising rates. Vulnerable peasants were physically tortured to pay up, and when they didn't have the means to pay, the British confiscated their farmland for themselves. Tens of millions of landless peasants were created for the first time in Indian history. By the end of the 19th century, India was Britain's largest source of revenue by far, its largest purchaser of exports, and a source of highly paid employment for both British civil servants and soldiers, and they were all paid for by Indian taxes. Many British officials freely acknowledged the exploitative nature of the colonial enterprise. In fact, a Prime Minister of the UK, the Marquess of Salisbury, himself admitted, "As India is to be bled of money, the lancet should be directed to those parts where the blood is congested." And just like that, India and its people were bled dry. The fundamental issue of British overlordship was the fact that the British had no intention to become one with the land or to rule it as their own. The British saw India as innately and eternally foreign, and this justified their creation and maintenance of what scholars have referred to as an extractive colony. For comparison's sake, consider the Turkic peoples who invaded India and eventually formed the Delhi Sultanate and the Mughal Empire. Look, the Mughals were no heroes. They imposed unequal taxes, engaged in religious discrimination, plundered local treasuries, visited great violence upon their enemies, and exhibited a Persianized racial arrogance. But one thing is clear: India's wealth was preserved at a foundational level. After nearly 2 centuries of Mughal rule, India was still a dominant economic power, responsible for 27% of global trade. There's a simple reason for that. See, the Mughals had a foreign place of origin, Fergana, but they did not repatriate India's resources to their original homeland. India may not have been Fergana, but it had become their new home, and so their loyalties and energies were owed solely to India. Meanwhile, the British ruled India as disconnected tyrants. The bulk of the revenue from India wasn't reinvested in India. No. It was extracted and repatriated to their distant, foggy homeland. How much? Modern economists have estimated that the total amount of wealth that the British extracted from India is in the ballpark of $43 trillion. Yes, $43 trillion. When taxes are not spent in the country from which they are raised, they constitute an absolute loss and extinction of the whole amount withdrawn from the taxed country. The money might as well be thrown into the sea. Such is the nature of the tribute we have so long exacted from India. Apologists for colonial rule often point to the railways as some sort of extravagant counter to the argument of extraction and divestment. But as modern scholars have pointed out, the railways serve as evidence for how exploitative and inefficient British investment in India really was. First, there's the bold assumption that Indians would not have built railways, like the Japanese or others, either by importing the technology or by developing their own. India had been far too advanced and cutting edge of civilization to not keep up had it been given the opportunity to do so. When the British came to India, the country was the leader of Asiatic civilization. Japan was nowhere. Now, in 50 years, Japan has revolutionized her history with the aid of modern arts of progress, and India, burdened by 150 years of English rule, is condemned to tutelage. But let's ignore that for now. Initially, the Indian railways were positioned as a grand investment scheme for British shareholders. The government guaranteed substantial returns of at least 5% per year, and when the revenues were not enough to pay out these returns, Indian taxpayers covered all the losses. Because of these taxpayer-backed guarantees, construction of the railways was extremely inefficient. Here's a fun stat: every mile of Indian rail cost £18,000 to construct, as compared to £2,000 for the same mile built in the United States. All the elements of railway construction, steel, wagons, gears, engines, and more, were produced by British manufacturers. Indians weren't even given an opportunity to produce their own manufactured alternatives because the British government imposed restrictions that prevented Indians from competing.
Worse still, the essential purpose of the railways was to assist the British enterprise in the exploitation of the natural resources of India. In fact, the railways made it possible for the British to export enormous amounts of grain and other agricultural products, which sparked and exacerbated famines. Over the course of British rule in India, an estimated 35 million preventable deaths were caused by famines. That's millions more than those killed under Stalin or Mao, and that's 5 times more than the Holocaust. The British were directly responsible for this. They mass exported Indian foodstuffs to Britain and other countries in Europe, even during drought periods. Food in India became too expensive for peasants to afford. According to Dr. Charles Hall, India starves so that its annual tax revenue to England may not be diminished by $1. There is plenty of grain in India. The trouble is that the people have been ground down till they are too poor to buy it. The British had no interest in provisioning for Indian lives. Famine non-intervention was official government policy. How ironic, given that heavy-handed British intervention and market manipulation is what sparked the famines in the first place. And when good people, Indians and foreigners, worked together to help famine-affected peasants, the British government made efforts to stop them. They were furious that the government's own failures were being highlighted. Don't believe me? Listen to this British officer in his own words. Scores of corpses were tumbled into old wells because the deaths were too numerous for the relatives to perform funeral rites. Mothers sold their children for a single meal. Husbands flung their wives into ponds to escape the torment of seeing them perish from hunger. But amid these scenes of death, the British government in India was unmoved. Newspapers were persuaded into silence. Strict orders were given to civilians. Do not acknowledge that civilians are dying of hunger. And if you think that Indians would have done a worse job, consider this. There hasn't been a single large-scale Indian famine in the 70-plus years since British rule ended. Not one. Independent India has its flaws, but it has been overwhelmingly better at providing for the care, safety, and prosperity of its own people. And now you know. एक अच्छी वीडियो थी और मैं ये कहूँगा कि इन 15 मिनट में हमने बेसिकली सब कॉन्टिनेंट की एक तारीख़ जो है वो हमने जानी और ख़ुसूसन ये तारीख़ जो है ये 17th सेंचुरी से स्टार्ट होती है जब से मुग़ल एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश होना शुरू हुई एंड ऑल द वे अप टू इंडिपेंडेंस। अच्छा, और आपने, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आप ये देखें कि जबकि हम सारा कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि इन बच्चों के लिए ये एनिमेशन का दौर चल रहा है ना, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस चीज़ को पोर्ट्रे कर दिया। बिल्कुल ऐसा है, मतलब वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स टू दिस बिकॉज अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट हम इन चीज़ों को अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी पुरखों से और फिर उसके बाद हिस्ट्री बुक्स के अंदर हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। और वही एज लाइक मोना सेड कि जब आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ की मिलती है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सामने वाला ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पे उस चीज़ की जो इलस्ट्रेशन होती है उसको समझ जाता है। इस वीडियो के अंदर हमने हिंदुस्तान का, मुत्तहिदा हिंदुस्तान का एक ऐसा पास जो है वो जाना है कि जो इतना शानदार था कि बाहर से आने वाली तमाम क़ुव्वतें, चाहे वो मुग़ल्स हों या वो ब्रिटिशर्स हों या वो और जैसे एक उन्होंने बात की पर्शियन एम्पायर के नादिर शाह दुर्रानी की कि वो यहाँ पे आया और उसने भी लूट मार की, कि ये तमाम की तमाम जो गैर मुल्की ताकतें थीं ये यहाँ के वसाइल को और यहाँ की जो इंडस्ट्री थी और यहाँ के जो एक वो फ्लरिश करता हुआ एक सिविलाइजेशन थी उसके ऊपर रूल करना, और फिर यहाँ की जो मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था ना जी हिंदुस्तान को, तो इस सोने की चिड़िया की एक एक बूंद लहू की निचोड़ने के लिए वो लिटरली इसको अपने बाप की जागीर समझ के यहाँ पर आए और उन्होंने बहरहाल किया। हाँ, मुग़ल्स बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है हिंदुस्तान में मुग़ल्स के ख़िलाफ़। दे आर नो हीरोज़ टू अस। आप हमारी वीडियोज़ के अंदर देखते रहते हैं, हम बात करते हैं इन इशूज़ के ऊपर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सब कॉन्टिनेंट में, बिकॉज़ सब कॉन्टिनेंट हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, मैं अपनी ज़ाती राय अगर उस चीज़ के ऊपर दूं तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि कोई भी सिविलाइजेशन किसी दूसरी सिविलाइजेशन पे रूल करने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको और अपनी हुकूमतों को और अपने मामलात को चलाने के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं, बजाय इसके कि कोई इन्वेडर आए और वो इन्वेडर आके उनके ऊपर अपनी
अपने कल्चर को उसको इम्पोज करें। और ऐसा नहीं हुआ करता, तारीख के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ करता। ऑप्रेस ज़रूर कर लिया जाता है, तमाम की तमाम जो क्या कहना चाहिए कि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनको पेजेंट ज़रूर बना दिया जाता है, उनको ग़ुलाम ज़रूर बना दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि उन इन्वेडर्स को, उन रूलर्स को जाना पड़ता है और दोबारा से वही सिविलाइजेशन जो है वो दोबारा से उभर के निकलती है, जो कि हम आजकल अब मॉडर्न इंडिया के अंदर हम वो चीज़ देखते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न इंडिया की तरफ नहीं आते, अभी हम ज़रा पिछली बात ही करते हैं, पास्ट की। उन्होंने इस वीडियो के अंदर बताया कि $43 ट्रिलियन के करीब जो हैं ये ब्रिटिशर्स यहाँ से लूट के गए। लेकिन अब यहाँ पर एक मैं मतलब उन डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊँगा, वो आप भी जानते हैं, वो डिटेल्स मैं भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर चंद सवालात रखने और उन चीज़ों के जवाबात ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आप जब कमज़ोर होते हैं ना तो आपका हमसाया आता है और आपके अंदर लूट मार करके चला जाता है। मुग़ल्स आए, बिल्कुल आए, लेकिन उन्होंने बहरहाल उनके जो एक वाहिद क्रेडिट पे जो चीज़ जाती है, बावजूद इस चीज़ के कि उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेटली जो हिंदू पॉपुलेशन है उसको उन्होंने मारा, उन्होंने वहाँ के मंदिर तबाह किए, लूटे और वहाँ की चीज़ों को लूट मार करके तो उन्होंने बहुत हद तक हिंदू मज़हब को ऑप्रेस करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या हो सका? अगेन मैं अपनी ही बात की तरफ रिवर्ट बैक करूँगा कि इन्वेडर्स आते हैं, आके हुकूमत करते हैं, उनका मकसद उस जगह को अपना घर बनाना नहीं होता, उनका मकसद वहाँ के रिसोर्सेज को ऊपर कब्जा करना और अमीर से अमीर तर अपनी किंगडम को करना होता है। देखिए बाबा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन जब वो रिसोर्सेज को पकड़ते हैं तब भी वो एक साइकिल चलता रहने देते हैं ताकि वो रिसोर्सेज से कुछ ले भी सके। अगर तो वो वहां से सिर्फ लूट मार के इरादे पे वहां पे ना आए हों, मतलब जिस तरह मुगल जाए वो यहाँ पे आके बस गए। हाँ, हम इस वीडियो में भी वही देखा और पास में भी यही सब मतलब उन्होंने हिंदुस्तान को अपना घर बना लिया। तो उन्होंने वो एक सर्कल चलने दिया, उन्होंने वो साइकिल बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये कतन इस चीज का मतलब ये नहीं है कि जो ब्रूटैलिटीज उन्होंने दिखाई हैं उनसे बंदा ओवरलुक कर जाए। लेकिन मुगल्स जो हैं और अंग्रेज़ जो हैं उनका कंपैरिजन आपस में नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक कौम यहाँ पर आई और उसने आके इसको अपना घर बनाया और बीच में अपने मज़हब को भी इंडक्ट कर दिया। भाई इस्लाम ऐसे ही आया ना, या अरबों के ज़रिए आया या इन मुगल्स के ज़रिए आया। लेकिन ये जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने तो 3 तरफ़ा 4 तरफ़ा हमला किया ना सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, और उनका कभी भी ये मकसद नहीं था कि वो सब कॉन्टिनेंट को खुद कॉलोनाइज़ करेंगे। उनका मकसद क्या था? यहाँ की एडवांसमेंट्स, यहाँ का रॉ मटेरियल और यहाँ से पैदा होने वाला वो सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात उठाएं और वो लेके जो है क्राउन को भेज दें। और उसके बाद क्या कि अपनी जंगों के लिए और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहीं के जो लोग थे उनको उन्होंने ऑप्रेस करते करते बिल्कुल उनको ज़मीन के अंदर तक घुसा दिया। लेकिन उन्हीं के बच्चों को उठा के वो ले गए और उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की एक आर्मी भी बनाई, और इवन जो वर्ल्ड वॉर्स होती रही वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो भेजा। अब इस चीज़ को मैं फर्स्ट हैंड आपको इस वजह से बता सकता हूँ कि मेरे अब्बा, मेरे वालिद, माय फादर, वो उस ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, ठीक है। और क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट थे, सो उन्होंने ये तमाम की तमाम चीज़ें ना सिर्फ अपने आँखों से देखी हैं बल्कि उन्होंने उस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया है। चलें इस चीज़ की डिटेल कभी दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या कुछ नॉलेज हमें है। लेकिन आप मुझे ये चीज़ बताइए कि क्या इस चीज़ को वहाँ पे नहीं रोका जा सकता था? मुगल्स यहाँ पर आए, उन्होंने आके एक एम्पायर बनाई, मुगल्स कमज़ोर हुए और लोकल जो एम्परर्स थे उन्होंने, या लोकल एम्पायर्स जो बनी हुई थी, उन्होंने उस चीज़ के ख़िलाफ़, उस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए। बहुत सा इलाका उन्होंने आज़ाद करवा लिया, यहाँ तक कि मुगल्स इतने कमज़ोर हो गए कि फाइनली ब्रिटिश आए और ब्रिटिशर्स के आने के बाद मुगल्स को यहाँ से भागना पड़ा, या उनको मार दिया गया, या उनको ख़त्म कर दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र थे ना आखिरी मुग़ल एम्पायर के अपना जो वो एम्परर, सॉरी, तो क्या किया गया कि उनको रंगून में डाल नहीं दिया गया कैद में, और वहीं पे वो मर भी गए। सो एम्पायर ख़त्म हो गई। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ पर 1947 तक बैठे रहे, लूटते रहे, निचोड़ते रहे, और सब कुछ यहाँ की रिसोर्सेज ना सिर्फ बाहर लेके जाते रहे बल्कि यहाँ से जो सर्विसेज हासिल की जानी थी उन सर्विसेज को उन्हीं टैक्सेस के ज़रिए उन्होंने पे भी किया, जो कि यहीं से उन्होंने सारे के सारे उठाए थे। वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते रहे वहाँ पे। और ये जो आज हम इंडियन रेलवेज़ का जो नेटवर्क है जिसकी हम बहुत तारीफ़ किया करते हैं, इसकी
ابتدا تو بیسیکلی انہوں نے کی, لیکن کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ 18,000 پاؤنڈ, ویئرز امریکہ میں اسی زمانے میں وہی ریلوے 2,000 پاؤنڈ کے اندر بن رہی تھی. سو جو سوال ہے وہ سوال بڑا ایک آبویس سا ہے, اور بہت سے دوست اس کا جواب بھی دیں گے اور بہت سے دوست اس کے اوپر ناراض بھی ہوں گے کہ یار سمجھ تو آ رہی تھی ہمارے پرکھوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے چلے گئے, اور ایک بڑی کلیئر ڈسٹنکشن بن گئی مسلمان اور ہندو کی, جو کہ ہندو, میں کبھی آج تک کسی ہندو کو, میرے بہت سے دوست ہیں, میں کبھی آج تک ان کو اپنا دشمن خیال کر ہی نہیں پایا, کیونکہ نہیں ہے میری ان کے ساتھ کوئی دشمن. اور اسی طرح میرے وہ دوست جب مجھے ملتے ہیں تو میں یہ چیز ایبسولوٹ سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی انہوں نے مجھے اپنا دشمن جان کے نہیں ملے. ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں, ہم ان کی جو ہیں فیملیز کو اپنے پاس بلاتے ہیں, ہم اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے پیتے اٹھتے جاتے ہیں, فیسٹیولز مناتے ہیں. سو دا تھنگ از کہ یہ ڈیوائڈ کون کریٹ کر کے گیا؟ آج ہندوستان, پاکستان, لاکھوں کی تعداد پہ آمیز اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا ایک ماحول. یار جو کرنے والے تھے وہ تو کر کے چلے گئے, اب پاکستانی ہیں یہ اٹھتے ہیں اور یہ وہی یورپ اور وہی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. مطلب یہ بات ہے نا, انڈیا ہے, انڈیا اس وقت مطلب برٹش کو یا جو اپنا پورے کا پورا یورپ ہے اس کو اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے انتہائی سیف ہیون تصور کرتا ہے. اصولی طور پہ تو آپ ان کو بزنس دے رہے ہیں, ان کو تو ایسا موقع ہی نہیں دیا جانا چاہیے. چند ایک اینٹیز ہیں نا, جیسے ٹاٹا ہے کہ اور مہندرا ہے, اور اسی طرح جو ہے ریلائنس گروپ ہے, جنہوں نے وہاں کی بہت بہت بڑی انڈسٹریز کو خرید لیا ہے, لیکن ایونچولی بزنس تو وہاں پہ جا رہا ہے. سو کیا چینج ہوا؟ وہ آپ کو آپس میں لڑوا کے یہاں سے چلے گئے, بڑی بڑی کمپنیز انڈیا میں کام کر رہی ہیں, آپ کو نچوڑا. کیا صرف ہندوستان میں ہندوؤں کو ہی نچوڑ کے چلے گئے؟ کیا مسلمان نہیں نچوڑے گئے؟ کیا مسلمان اوپریس نہیں ہوئے؟ سو دا تھنگ از کہ میں اگر اس چیز کو کیا کہنا چاہیے کہ سود کرنے کی کوشش کروں, یا اس چیز کو میں ایک لائٹر نوٹ کے اوپر میں بات کروں, تو میں یہ کہوں گا کہ یار وہ تو آج بھی کامیاب ہے. اور آج بھی دیکھیں ان کے کتنے میوزیمز جو ہیں وہ انہوں کے لوٹ کے مال سے بھرے پڑے, بالکل انہی کے لوٹ کے مال سے بھرے ہوئے ہیں. اور ایون مطلب انڈیا جتنا مرضی ان آرٹیفیکٹس اور ان چیزوں کو کلیم کرنے کے پیچھے جائے, دے پراؤڈلی سے کہ جی 150 سال سے یہ چیز ہماری ہیریٹیج کا حصہ ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے اٹ بیک ٹو انڈیا. وہ کوہ نور بھی تو لے گئے نا. میں اصل میں کوہ نور کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا. سو دا تھنگ از کہ یار یہ لوگ آپ کے مجھ سے زیادہ چالاک ہیں. آپ کو اور مجھے لڑوا ضرور دیں گے یہ, لیکن ایونچولی یہ ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے ہمیں لڑتا دیکھ کے ہمارا تماشا دیکھیں گے. یہ بس چالے چلنے کا کام کرتے ہیں. بالکل, اور وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہیں. وہ آج بھی کامیاب کی بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ہر طریقے سے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش لنک کر کے رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ. بالکل, اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جہاں سے جاتے ہیں وہ پیچھے ایک بون آف کنٹینشن چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر لڑتے رہیں. اب انڈیا اور پاکستان کے اندر بون آف کنٹینشن بیسیکلی کشمیر ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. جب الحاق ہو گیا تھا, کشمیر کے راجا نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا تھا, تو اس چیز کو نہیں, لیکن ایک بون آف کنٹینشن آخری تاریخ کو وہ چھوڑ گئے یہاں پہ, ہمیں آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ کے, اور خود وہ آج خود وہ بالکل بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. سو یہی ہسٹری ہے یار سب کانٹیننٹ کی. مطلب میں ویڈیو کے اندر جو بیان کیے ہوئے مختلف فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, بجائے اس کے کہ میں وہی ریپیٹ کر کے آپ کو سنا دوں, اب میرا ریئیکشن اگر ہے تو آپ میرا ریئیکشن لیجئے اور آپ بتائیے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. بیکاز دس از واٹ آئی تھنک کہ برٹشرز جو ہیں یا یورپی جتنے بھی یہ نیشنز ہیں, یہ نہ کل ٹرسٹ ورتھی تھے, نہ یہ آج ٹرسٹ ورتھی ہیں, اور نہ ہی یہ فیوچر میں ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے گا. ہم لوگ بھلے مختلف مذہب کے ہیں, میں مسلمان ہوں, اینڈ ممکن ہے میرے کچھ مسلمان بھائی وہاں پہ دیکھ رہے ہوں, ہو سکتا ہے میرے کچھ ہندو بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں, لیکن دا تھنگ از کہ ہمارے درمیان زبردستی کی ایک لکیر ضرور کھینچ دی گئی ہے. جڑے ہم ایک ہی زمین سے ہوئے ہیں, ہمارا اوریجن ایک ہے. اگر ہم سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے مسلمان بھی اسی سناتن دھرم کا حصہ ہوا کرتے تھے, آئیڈیالوجیز چینج ہو جاتی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ نہ میں آپ کی آئیڈیالوجی کو چیلنج کرنے والا ہوں اور نہ ہی آپ ہیں. سو دا تھنگ از کہ جو کور ایشو ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جب آپ کی آپسی لڑائی کو دیکھا جائے گا تو آپ کا پڑوسی گھسے گا بھی, وہ اس کو آپ کی ڈسکرمنیشن بھی کرے گا اور آپ کو لوٹے گا بھی, اور فائدہ بھی وہی اٹھائے گا. اینی ویز اسی نوٹ پہ اس ویڈیو اور اس ریئیکشن کو ختم کرنا چاہیے, اور باقی آپ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا ریئیکشن کہاں تک درست لگتا ہے, ہم کہاں تک چیزوں کو صحیح طرح سمجھنے اور اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ہمیں بتائیے, اور اگر آپ ایگری نہیں بھی کرتے تو ہمیں کامنٹ ضرور کیجیے گا.
کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں ہمارے جو کہ آپ کے نزدیک ویلڈ نہیں ہیں. ہمیں سننا اور اس کو پڑھنا اچھا لگے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے.